Good morning, students. Today we'll be learning about how to create a database table. Okay, what is the command? What is the query? To create database table, then insert the values into the database table, then alter the table. If after creating the table, if you want to alter it later on, then how we will alter it, update and drop. So till now we are studying how to retrieve the values. But before that, you should be knowing how to create a database table, how to insert the values into the database table, how to alter the table, how to update the table, and how to drop the table. So create. So I will be writing the syntax बोलिए, command बोलिए, जो भी बोलिए. Okay, the command how we will be doing, how we will be performing all these operations. Create table name, whatever name you want to give to the table, that name you will give as per your wish. Column name 1, then it's data type. What data type do you want to show? Then column name 2, data type, uska data type, like this. Okay, so this is how the create table works. Then after fetching this command, what will happen? A database table will be created with this table name, where you will be having columns 1, 2. You can mention here, instead of this you can write here roll number, name. Roll number है तो you can write it integer type. If your roll number is 1, 2, 3, 4, like this. If your roll number is A01, A02, then you have to write here as Bharkar. Alright, चलिए अभी मान लेते हैं स्टूडेंट्स टेबल. आई वांट टू construct a student table in my database. So what I will do, यहाँ पे नाम दे दिया student. I can rub it out and I can rewrite it again. Okay, but that will not serve the purpose. इसी को modify करके then you will be understanding it nicely. What changes I am doing to the existing one. Create table, ठीक है, this much is okay. This will be writing in block the table name. Table name you want to create one table with the name STD, student table. Okay, then you will be writing a STD. Then you want in the STD table the first column to be as roll number and the second column to be as name of the student. Okay. As name, student name. Roll number you want to hold as A01, A02, like that. Here you want to hold character type data. So 30. This you can write inside bracket also. Okay. So and at last semicolon. What will happen? This will create a database like this. Say another one age. यहाँ पे था तीसरा कॉलम एज. Alright. So age will hold integer type values int. So after this command is being fetched, this will create in our database a table
टेबल का अदर नेम क्या था, रिलेशन, ए रिलेशन लाइक दिस, which will have column name, roll number, s name, age. It can hold variable character as its data. It can, s name can hold only character type data, and integer type data can be held by the age column. All right. A table is being created. Okay, just now I have created the table. Now what I will do, I will insert values into this table. So for that, what is the command? Insert into table name. Insert into table name. Table name क्या था, std था. Okay. Insert into table name. Then you have to write the column names. What are the columns? In which columns you want to insert the values? Roll number, s name, age. In these three columns, I want to insert the values. Then you will be writing values in block letter. These are the keywords. जो भी कैपिटल में दिख रहा है वो सब कीवर्ड्स है, इसे छोड़ के ये क्या है, ये टेबल नेम है. Then these are the values I want to enter. I want to fetch the first value, okay, first record as A01. After this query, after this command is being fetched to the database, what will happen? This will be the change that will reflect in the database. This will be the change that will take place in the database. Similarly, you can enter the second value also. Second value के लिए फिर से ये कमांड लिखना होगा, insert into table name, column name, then values, whatever values. So the second value I am inserting. For the second value, I will have to write it again, right? This is how the insert query works. Create हो चुका है, insert हो चुका है. Alter का 3 होता है, okay? Then update and then finally drop. Drop का syntax है drop table table name. Drop. If you have created this database table, if you have inserted the values, after that you want to drop the table, you want to delete the table. ये क्या काम करता है, डिलीट का काम करता है. ड्रॉप, ये तो इंसर्ट का क्वेरी था, ये ड्रॉप का क्वेरी. ड्रॉप टेबल std. व्हाट विल हैपन, दिस std नाम का जो डेटाबेस टेबल था वो डिलीट हो जाएगा डेटाबेस. ओके, दिस ड्रॉप टेबल विल, this drop command will delete the table from the database. Then we are left with these two. So I am logging it out. All right. Then comes these two. Okay. Say update I am discussing first. Database में तो हमने insert कर दिया values. Okay. जो records I have fetched already fetched in the. Now we will be dealing with update. Say by mistake the DTP operator has inserted the value 16. It should be 18. इसका 18 था age, गलती से राज का age 16 डाल दिया. Then what will happen? तो डाल दिया, डेटाबेस में रिकॉर्ड हो चुका है, एंट्री हो चुका है, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो फिक्स फाइनल हो चुका है. You can alter it also later. So that is updation. Okay, you will be updating the database. You will be updating the record in the database. So for that, what is the command? Update table name. टेबल नेम क्या है हम लोगों का std. Set age equal 18. Set age equal 18 किस में? यहाँ पे तो मल्टीपल कॉलम्स है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स है. Set age equal to 16, where age equal to 16. ऐसा भी कर सकते हैं. जहाँ पे 16 है उसी को age 18 मान लीजिए. ऐसा 16 बहुत सारा है, सभी 16 तो 18 नहीं हुआ, गलती तो एक में हुआ है. Then this condition checking part, where is the condition checking part? Then you do with the name. Condition checking can be done with the name also. Say राज का हम लोगों ने गलती से 16 कर दिया था, लेकिन वो एक्चुअल में है 18 एज, उसका ईयर से 18 इयर्स. सो वेयर एस नेम इक्वल राज, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा. ओके, सो जब व्हाट दिस क्वेरी विल डू, दिस क्वेरी विल सर्च द रिकॉर्ड विथ एस नेम राज. मिल गया राज, तो राज का एज क्या सेट कर देगा, 18 सेट कर देगा. सो दिस विल अपडेट द डेटाबेस एज 18. The age column of the database will be updated as 18. Okay, कभी कभी इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है. So what does set keyword do?
So you can write it this. Update का syntax लिख देने से भी चलेगा. Set columns or set keyword performs the following things. It updates the records in the database. Okay. Then बचा alter. अभी alter का तीन होता है, add, drop, modify, add, drop, modify. Alter, these are the syntax. अभी मान लीजिए कि we have made one database table and we want to alter it later on. Say alter table std, वहाँ पे हम लोग class नहीं था, class बोल के और एक column add करना चाहते हैं. Create means what? Class. कौन सा class में पढ़ते हैं. तो after this query is being fetched, ये पहला वाला फेच करने के बाद क्या हो जाएगा, नया वाला एक कॉलम बन जाएगा ग्रेड. ग्रेड नाम से एक नया कॉलम बन गया. सो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्टर योर डेटाबेस टेबल. ओके, ऑल्टर द टेबल. सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव क्रिएटेड ऑल्टर टेबल एसटीडी ऐड ग्रेड. ग्रेड नाम से दूसरा कॉलम को मैंने ऐड कर दिया. क्या कर दिया, ऐड कर दिया. एंड ये क्या होल्ड करेगा, इंटीजर टेबल होल्ड करेगा. क्लास 6, क्लास 7, ऑल दिस. So this boy is studying in class 11, this boy is studying in class 10, like that. Alright. So दूसरा drop ये अभी है. This is the existing form of the database. Now I want to drop this column from the database. So alter table std, वहाँ से क्या करूँगा, drop करूँगा. किसे, grade वाला column को drop करूँगा. तब data type का जरूरत नहीं है. जब we want to add one column, then the column's data type should be mentioned. When you are dropping the column, no data type should be mentioned later after this. तो आफ्टर दैट व्हाट इट विल डू, इट विल ड्रॉप दिस ग्रेड नाम से जो कॉलम था डेटाबेस में एसटीडी टेबल के अंदर, उसे ड्रॉप कर देगा. अंडरस्टूड. देन फाइनली मॉडिफाई. से एस नेम जब मैंने टेबल क्रिएट किया था तब मैंने दिया था एस नेम विल होल्ड कैरेक्टर टाइप डेटा 10 दिया था. एंटर करते वक्त ऐसा लगा कि किसी एक का नाम आ गया जो बड़ा कैरेक्टर है. ये क्या 3. ओके, 10 दिया था, मतलब 1 2 3 4 10, ऐसा 10 लेगा. किसी का नाम आ गया बड़ा सा, दैट यू कैन नॉट एंटर द होल नेम हियर. देन व्हाट यू विल डू, यू विल मॉडिफाई द डेटाबेस. कैरेक्टर अभी 20 सेट कर लिया मैंने. तो someone's name having 20 alphabets you can store now if you modify it. Alright, I hope the basics are clear to you now. Thank you for watching.